Fine. This is ACL notes. Extended. Okay, fine. It's just before the examination, we were discussing about ACL. ACL, I'm just again giving brief introduction about ACL, just for the recall. ACL means access control list. Access control list means controlling of access, right? Simple meaning, controlling of access. Controlling of access. In a network, we access a node, a data. Fine. I have used word node. Node means we can access a complete node. Complete node means like remote accessing tool by using Telnet, SSH, remote desktop, MAD, NCS, anything. Or we can access some data. Fine. Till now, we have learned only about the establishment of connectivity between different node, different network. Fine. Now we have to control the data traffic which will run on the established network. जो हमारे बनाए हुए नेटवर्क पे डेटा ट्रैफिक रन करेगी, उसे अब हमें कंट्रोल करना सीखना. And as you all know that router is a network layer device. And at network layer, IP address is used for addressing, means logical addressing. So, if we are talking about ACL, means controlling of access at router level, then we can control it by using IP. Fine. Controlling can be done by IP and one more, port number, or you can say service. IP and services. Because see, at physical layer, we have responsibility to put our data on the media. At data link layer, we have responsibility to form frames. At network layer, we have to responsibility to form data packets. But at transport layer, at session layer, at presentation layer, and application layer,
At all these layers, we have to just manage our data, manage our connectivity by using different services. Most of the protocols are used at application layer for data handling at presentation layer, for generating session for different processes. A session layer is used. Yes. Good morning. And transport layer is responsible for reliable and unreliable data transmission. So these layers are above the network layer. That's why we can control the data traffic on the basis of services also. Fine? No. So overall, we can control data transmission on the basis of IP and services. For this controlling, ACL can be used or implemented by using two methods. One is numbered and second is name. So if we will use number to define different ACL, in that case, ACL is known as numbered ACL. And if we will use a name in place of number, then it is known as named ACL. Fine. It is just a configuration-based implementation method. But basically, ACL has two types: standard ACL and extended ACL. So the standard or extended, these two can be under numbered ACL and these two can also be under named ACL. Standard and extended. Fine. जब हम नाम से और नेम नंबर से और नेम से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के बाद रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें ACL के दो डिफरेंट टाइप को समझना होगा. तो बेसिकली दो टाइप, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड. तरीका हमारा जो, ठीक है. अब बात आती है व्हाट इज स्टैंडर्ड ACL. स्टैंडर्ड ACL in case of a standard ACL, if we have this type of network like this, we are used to for using this network because most of practicals have been done on this scenario. But again, same scenario. And IP is, for example, 1, 2, 3, 11, 12. Fine, simple. Now, suppose I have to stop a node of this network to communicate with this network or on a specific node. We have to stop this communication. रोकना. अब standard ACL में क्या होता है? It uses only source address. What is source? A node which we have to stop is source, and to which we have to stop is destination. So in our case, this one is the source, this one is the destination. Fine. So in a standard ACL, we use only source address. Means इस node का IP address ही इस्तेमाल होगा. Fine. No specific service can be blocked or controlled, can be controlled.
कोई भी स्पेसिफिक सर्विस हम नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि इसमें सर्विस डिफाइन करने का फैसिलिटी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अगर हम नंबर के केस में जाएंगे तो इसके लिए न्यूमेरिक रेंज है एंड दिस न्यूमेरिक रेंज इज 1 to एक मिनट रुक जाओ। Anyway, come to the point once again. In a standard ACL, we can use only source address. Second thing, we cannot specify any service. That's why we cannot control it. If we will block any particular IP address, in that case, all services will be blocked. Fine. And we were talking about numeric range. Suppose if we have to define numbered a standard ACL, in that case, numeric range will be 1 to 99 and 1600 to 1990. Fine? Yes. 1600 to 1990. If we will use value from this range, in that case, our router will automatically understand that, okay, admin is trying to configure standard ACL. Getting my point? ये वैल्यू ही बताएगी कि एडमिन क्या करना चाहता है, स्टैंडर्ड एसीएल डिफाइन करना चाहता है। ठीक है, ना अब ये स्टैंडर्ड एसीएल को थोड़ा डिफाइन करते हैं, कैसे क्या करें। तो हमारे केस में सिर्फ सोर्स एड्रेस यूज करना है। ठीक है, चलो अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें,
तो जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं करना है कि कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा करके और आपने कमांड लिखना है access list 1 deny to which node. For example, this first node IP is 1.0.0.2. Fine. Then I specify its IP host 1.0.0. Okay, fine. हमने डिफाइन कर दिया कि इस नोड को डिनाई कर दो। जब भी डिनाई स्टेटमेंट देंगे तो इसके अगेंस्ट में एक परमिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, इस नेटवर्क के बाकी नोड को भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1 permit any. Now fine. Now, why we are using permit any? I have already told, if you are putting some deny statement, so your router will check it. Okay, deny. The first term is deny, and then the host is this. If any other node like 1.0.0.3, 4, 5, 6, 7, 8, any node will try to communicate with another network. In that case, it will always deny, fine, deny. Because कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे। देखो जैसे क्या है, ये दिस वन इज द डिनाई स्टेटमेंट, उसके आगे होस्ट है। तो ये क्या किया, ACL सिस्को राउटर देखा एक्सेस लिस्ट ओके 1 ओके डिनाई, ठीक है डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है, तो यहाँ पे कंडीशन मैच किया, तो इसको डिनाई कर दिया। यहाँ तक तो बात सही थी, जैसा हमने सोचा सेम टू सेम our router is giving output. Fine. If suppose 1.0.0.3 is trying to communicate, in that case our router should allow it. But what will happen? Access list 1, deny, okay fine, deny, host this one. यहाँ पे मैच नहीं होगा, लेकिन मैच ना हो तो क्या करना है, ऐसा डिफाइन भी तो नहीं है। प्रोग्राम की लॉजिक है, अगर मैच ना हो तो क्या करें, तो मैच ना हो तो परमिट स्टेटमेंट है नहीं, तो फिर ठीक है मैच हो या ना हो डजंट मैटर, भैया डिनाई कर दो। लेकिन जैसे ही कंडीशन मैच नहीं किया और उसके नीचे सेकंड लाइन मेंशन है कि एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, बाकी सबको अलाउ करो, मतलब सबको अलाउ करो, बाकी नहीं सबको अलाउ करो। तो ये सब जैसे ही यहाँ कंडीशन मैच नहीं करेगा, अगला स्टेटमेंट मिल जाएगा तो उसको अलाउ कर देगा। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो ना, गड़बड़ किया नहीं तो बस, ठीक है, ये काम तो कर लिया। ना इंप्लीमेंट करने की बारी है, तो इंप्लीमेंट कहां करें? This is the rule which I have defined. But implementation is required because at a router there are many interfaces. There can be many interfaces. Serial interface, fast Ethernet interface, multiple serial, multiple fast Ethernet interface, fast Ethernet interface can be there. So that's why we should define here interface fast Ethernet 0/0 and then IP access group. Which group? 1, then out. Now, but the question is, at which router we have to configure and implement? If we are going to configure it and implement it at first router, means source router, in that case, what will happen? Anybody can guess? क्या हो? It will block that IP, and if other IP came to that node or
access. See. Suppose we have configured it and implemented it at this interface. Now this node is trying to communicate with this node. Then it will block, deny, fine. लेकिन यहाँ पे क्या ये डिफाइन है कि which destination? Destination तो डिफाइन है नहीं. तो फिर वैसे केस में इस राउटर को ये कैसे पता चलेगा कि किससे रोकना है? वो सिर्फ ये जानेगा कि हाँ इसको रोक दो, तो रोक दिया. अब now if your node will try to communicate with the node of this network, then what will happen? It will deny. तो उसको तो सारे जगह जाने से रोक दिया ना आपने. ठीक उसी तरीके से जैसे नीतू को अगर मैं गार्ड हूँ, मेरे को आप जो है डायरेक्टर सर ने कहा कि नीतू को रोक दो, मैंने कहा फाइन. अब बोला कि तुम एक काम करो, 1C के गेट पे बैठ जाओ, दरवाजे पे बैठ जाओ. मैं इधर ही बैठ गया. मुझे ये नहीं मालूम नीतू को कहाँ जाने से रोकना, इतना मालूम है नीतू को रोक. अब क्या होगा कि whenever Neetu will try to go out of this class, or you need to stop. I have to go to faculty room. I have to go to washroom. I have to go to take my lunch. I have to go to drink my water. No, stop. It doesn't matter for me where you have to go. I have instruction that I have to stop. It's a problematic. Yes, yes. प्रॉब्लमेटिक है, ये तो फंस गई. अब क्या करें? दिमाग डायरेक्टर सर को कंप्लेन किया सर ये कैसा इंस्ट्रक्शन दे दिया. ओके फाइन, मुझे आप डिनाई किए हो, लेकिन ये तो बता दो किससे किए हो. बट ही हैज नो आइडिया हाउ टू डिफाइन डेस्टिनेशन. फाइनली बल्ब जला. डायरेक्टर सर ने मुझे उठा के कहाँ रख दिया? 1C के डोर. तुम चलो 1C के डोर पे बैठ. फाइन, अब मैं 1C के डोर में बैठ गया आराम से. नाउ नीतू इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन दिस प्रेमाइसेस, but whenever she will try to go into classroom 1C, I'm there. समझ रहे हैं बात? That's why I have not written the name of router, because in case of a standard ACL, we have to configure and implement this rule at the destination router. In our case, the destination router is router 3. So router 3. Fine. Now point is clear why I am configuring this ACL at destination router. पॉइंट क्लियर है क्यों मैं कॉन्फ़िगर कर. ये है सर, इसमें कुछ बातें कमी. ठीक है. नाउ आई हैव यूज्ड अ नंबर to define this ACL. That's why this ACL is actually numbered standard ACL. Now अगर हम ये नेम वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, then what will be the configuration step? Again, I'm doing the same thing. Then router 3, again destination router, then configuration mode. At this configuration mode, now I'm going to use name concept, IP, access list, then use name standard. Now this standard word is defining the type of ACL. Standard, then give a name like कोई भी नाम दे सकते हैं. दे दिया नाम रूल 1. फाइन, कुछ सीता गीता रीटा पीटा कुछ भी डाल. फाइन.
नाउ अभी इस ACL में क्या करना है? When I host 1.0.0.2, then again format any, fine, format any. Now exit. Very simple. और इन लाइंस में एक चीज और आती है कि लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। नंबर वाले केस में अच्छा अच्छा वो टफ साइड का दिखता है, इसमें लॉजिकली दिखता है, अच्छा ये रूल बनाया है, इसमें हम डिनाई कर रहे हैं, फिर बाकी को परमिट कर रहे हैं। और नाउ इम्प्लीमेंटेशन देख, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, देन IP access group rule 1 out. Fine. Yeah, standard is fine. सर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सपोर्ट से ही हम देखेंगे कि नंबर्स आएंगे इस तरह। Now fine. Suppose here we have only stopped one node, one host. Suppose we have to stop complete network.
This network should not communicate with this network. Then just make a simple change with it. Remove this host, and in place of host 1.0.0.2, just write 1.0.0.0 network IP, and then wildcard mask 0.255.255.255. This is wildcard mask. I have already taught you in case of OSPF. It is just opposite the subnet mask. Simple concept. In this case, all nodes of this network 1.0.0.0 means 1.0.0.2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. All nodes will be blocked from communicating to third network. Clear? Suppose, sir, I have to stop a few selected nodes like 1.0.0.2, 1.0.0.10, 1.0.0.20. Then in that case, what should we do? We should just write this line again and again. Write this line like access list 1 deny host 1.0.0.2, access list 1 same rule number, access list 1 deny host 1.0.0.10, deny host 1.0.0.20, 30, 40, 50, 60. And then finally give a permitted statement access list 1 permit any. In this way, you can block some selected nodes, one node or multiple nodes. Oh, sorry, all nodes. Where it's a very interesting rule. So now I'm going to mark your attendance. Any question? Any doubt? Yes, sir. Yes, please. If we have to mark certain to the certain days, or to 1.0.0.2 to 1.0.0.10. Yes. Look, here we are blocking with the help of IP address. But in IP address, range can be defined in blocks only. Like block can be of 4 IP, can be of 8 IP, 16 IP, 32 IP, 64 IP. So if you have some certain range, then in that case, you can write here. For example, I'm going to block nodes from for nodes like 0, 2, 3, 5, 0 is here. If we will take block size 4, then the range will be 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11. Fine. Now I'm going to take second block. Then the IP will be 1.0.0.4. This is the start IP of second block. And then its wildcard mask will be 0.0.0.3. Now, 4, 5, 6, 7. These 4 nodes will be blocked by this. Fine. Named is here. Named, I have already given you an example. If you want to particular network from that, then they Fine. Just change this value. Fine. Very simple. In place of this, just write 1.0.0.4, 0.0.0.3. network. Complete network. Then write 1.0.0.0,
Fine.